Good morning, students. I hope you all are doing well. And today is first day of our year. Wishing you a very happy new year to all of you. Please take care of your health. And apart from that, please keep revising each day the previous concepts. And apart from that, just make a habit of studying at least 3 to 4 hours each. And today we'll be doing a very important part of whole grammar, that is comprehension. What do you mean by comprehension? Comprehension means to understand. कॉम्प्रीहेंड का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को समझना. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द पैराग्राफ इज ऑल अबाउट, देन वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Sometimes we have to answer the synonyms and antonyms. Sometimes we have to find out the similar words from these unseen passages. And you can only have a command on these passages when you have a command on reading. So reading is the key to achieve a good command over LSRW, that is listening, reading, writing, and speaking. Right? This can only improve all these four important skills of your knowledge. And apart from that, if you are in the regular habit of reading, then you can easily crack any of the entrance examination, because this reading comprehension आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने का, because it will be present everywhere in your academics, in your academic exams, in your you can say in your entrance exam. If any of you are giving your any exam for the, like you are giving the exam for PCS or whatever exam, any government exam you are giving, any teaching exam you are giving, any exam, any law exam, this reading comprehension will definitely come. Either it will come in 2 marks, 3 marks, and whatever. So this is one of the most important section of the whole English paper, that is section A, in which we actually see sometimes two reading comprehension, sometimes a passage, sometimes a poem. So it can only be achieved if you have a good habit on reading. So this is my humble request from all of you, that please do reading each day. Each day at least read 2 to 3 pages and try to find out all the word meanings and just write down in your respective. So today we'll be doing at least 4 to 5 passages. I'll be explaining you, and on the explanation of that, you will be doing all these question answers that are respectively given below your passages. So let's just begin. So the title of our chapter is comprehension. Comprehension, I already told you, it's the explanation of, basically comprehend means to understand. So what is comprehension? देखिए, अंडरस्टैंडिंग का गिवन अनसीन पैसेजेस. व्हाट डू यू मीन बाय अनसीन? मीन्स जो आपने पहले कभी देखा नहीं, जो आपकी नजरों से पहले कभी निकला नहीं है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन. एंड इट इज रियली इजी वर्कआउट. कहने को ये बहुत इजी वर्कआउट है इफ यू हैव अ गुड कमांड ओवर रीडिंग. राइट? द पैसेजेस, द ओवरऑल मीनिंग शुड बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स. सब चीजें अंडरस्टूड होनी चाहिए बिफोर दे कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंड. व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रीहेंड? मीन्स टू अंडरस्टैंड the question ka nature and provide their original answers. So first we'll be starting with the passage number 1. In this we'll be studying, देखिए, the latest forest survey of India, जो forest survey है इंडिया का, it has sent, it has not send, ये past tense में लिखा हुआ है send, shivers down the spine of the environmentalist. की जो environmentalist होते हैं, who are environmentalist? The one who takes care of the environment. And the green lobby reports आर कॉरेस्पॉन्डेंट. उनकी लॉबी की रिपोर्ट्स की कैसा एनवायरनमेंट में सब कुछ चल रहा है एवरी डे अबाउट 1.4 स्क्वायर किलोमीटर. दिस इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर, राइट, ऑफ डेंस फॉरेस्ट. डेंस फॉरेस्ट मीन्स बहुत ही घना फॉरेस्ट जो है, इट इज बीइंग लॉस्ट. वो लॉस्ट हो रहा है हर एक स्टेट में ऑन एन एवरेज, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द वेंट ऑन डिस्ट्रक्शन. वेंट ऑन मीन्स रेगुलर डिस्ट्रक्शन, स्पेशली illegal following by the timber smugglers. जो timber smugglers होते हैं, basically they cut the wood for this timber and they then sell these timber woods, right? And the report said कि nearly 1062 square kilometer जो dense forest है, it has vanished. देखिए, very important word of the unseen passages and one of the most favorite word of the examiner, this vanished, opportunity, escape, and one more thing, one more word you might be similar, dwell, right? So in the state during the last 2 years में इतना forest area क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, vanish हो चुका है, disappear हो चुका है. अराउंड ऑल दो 896 स्क्वायर किलोमीटर जो है ओपन एरिया, ओपन फॉरेस्ट का और मैंग्रोव्स का, वो भी फॉरेस्ट एरिया में ही आता है, फॉरेस्ट एरिया ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द सेम पीरियड. और एक्सपर्ट्स क्या फील करते हैं? लॉस इन टर्म्स ऑफ दिस डेंस फॉरेस्ट, इट वाज इररिपेयरेबल. इररिपेयरेबल मींस बहुत ही मुश्किल है वहां पे वापस से वही सारे डेंस फॉरेस्ट को उगाना, राइट? So the forest area which has been born, what do you mean by this born? Born means carried. देखिए, दो born होते हैं, एक तो ये होता है और एक होता है BORN.
Born means पैदा होना. Though both our pronunciations are same, right? Because they are homonyms. They have the same pronunciation, but they have different spellings, right? Born means carried. Very important word. On the onslaught, what do you mean by onslaught? Means काटना. किसका? Timberwood का. Timber mafia have been during the recent years में they have covered almost 2/5 of the total area. जितना भी total area है state का, उसका 2/5 वो लोग क्या कर चुके हैं? काट चुके हैं. और जो टिम्बर माफिया है, it has ruled the root. Rule the root means पूरे फॉरेस्ट पे कब्जा कर रखा है. इन दी फॉरेस्ट एरियाज दे हैव थ्राइव्ड ऑन स्मगलिंग. थ्राइव्ड मींस एकदम भरपूर मात्रा में स्मगलिंग करते हैं. इलीगली टिम्बर को नेबरिंग स्टेट्स में कट कट के पहुंचाते हैं, राइट. द फॉरेस्ट का जो लॉस है फाइनेंशियल टर्म्स में, मतलब पैसों में, लास्ट 2 years में अगर हम उसकी अकाउंटिंग करें, तो वैल्यू ऑफ द गेन इन दी ओपन फॉरेस्ट में और मैंग्रोव फॉरेस्ट में, as per the conservative means one who conserves the environment, estimate is 33.233 crore. It is not 33.233 crore because point के बाद value कम हो जाती है, that is why it is 233 crores, right? And the total environmental value है forest की, it has been estimated as, this is ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh. This is 25 lakh, 10,000 and 263 crore rupees, right? They have given you the figures, right? If it is asked in the questions, then you have to just look at the figures and write down the answers. तो सेक्रेटरी जो है वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के और उनके जो ऑफिशियल्स हैं, while expressing their concern, उनका जो concern है over the alarming means the rising rate of this dense forest, it has been attributed to the failure of this dense department and wildlife wing in curbing means in protecting the illegal falling of the inadequate infrastructure को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं. The number of alarm encounters, when encounters means to attacks हो रहे हैं, assault means उनको जो धमकियां दी जा रही हैं फॉरेस्ट की forest personals को, it has registered a quantum means एकदम हाई इंक्रीज हो चुका है रिसेंट ईयर्स में. और मोरओवर जो बजट का एलोकेशन है विच इज 70 करोड़ फॉर द डिपार्टमेंट, इट वाज क्वाइट इनएडिक्वेट. वो भी बहुत कम पड़ रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट हेल्थ एंड ऑफ कोर्स द वाइल्ड लाइफ. देखिए ये जो budget allocation of 70 crore rupees, we all know that every year budget is passed on 1st of February. The finance minister हम लोगों की कौन है? I think she is Nirmala Sitharaman, and recently the finance minister has changed, and she every year she used to pass the budget for the whole country, that is on 1st of February, right? Now next is, it is a well known fact कि जो environmental की value है forest की, वो हमेशा exceed करती है financial value से, right? Therefore जो following है trees का, in tangible means जिन्हें आप छू सकते हैं वो product होते हैं, और much more environmental loss है उसमें which are not tangible, जो चीज tangible नहीं है, right? Now preservation of this wildlife and minimizing the adverse means very bad effects of the pollution, better rainfall, they all are some of the advantages. ये कुछ advantages हैं, इसीलिए adequate measures लिए जाते हैं so that they can protect the existing forest and of course measure for the further afforestation. What do you mean by afforestation? Means planting more and more trees. The antonym क्या है? Deforestation means cutting down of all the trees to waken up on war footing, कि ये चीजें जो हैं clear हो जाएं, ठीक हो जाएं. That was all about this passage. Now these are the question answers, that what are the impact of the forest survey. These question answers you have to complete on your own, and again I'm just showing you, you have to choose the word nearly which is the same, that is इनका antonym. जैसे देखिए dense means thick forest, बहुत ही घना जंगल. So this is how you can remember all those words. देखिए thrived, कंजर्वेटिव है मतलब बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, क्योंकि वो पुराने ख्यालातों में बिलीव कर रहे हैं. अब देखिए आ गए आपके एंटोनिम्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. इररिपेयरेबल मींस जिसको आप रिपेयर कर सकते हैं. इट इज दिस इज ना ऑपोजिट ना, सो दिस इज लाइक आप कह सकते हैं दिस इज समथिंग विच इज इररिपेयरेबल. रिपेयरेबल जिसको आप कर सकते हैं, है ना, इट्स, आई थिंक इट्स मैंडेटरी, राइट. इसी तरीके से अलार्मिंग मतलब जो बहुत ही ज्यादा राइज हो रहे हैं, तो आप इसका आंसर साइलेंट लिख सकते हैं, राइट. Moving on to the next passage, you have to read the following passage very carefully and you have to find out the certain words that are similar. So education, particularly जो higher education है, वो बहुत ही ज्यादा obvious है, means it's very regular, but it's crucially important instrument है हमारे nation के लिए. Higher education, what is higher education? When you study after 12th, whatever graduations, post graduations that you are doing,
बेसिकली कम्स अंडर हायर एजुकेशन, जैसे कि डॉक्टरेट्स की पढ़ाई करना, एमबीबीएस के बाद एमडी एमएस सर्जन करना, एम मास्टर्स करना, एलएलबी करना और बहुत सारी डिग्रीज करना, उन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, दिस इज द हायर एजुकेशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन as building as Confucius has said. Now, if you are thinking of 1 year plant rights, अगर आप 1 साल का देख रहे हैं plant rights का, and if you are thinking of a decade means a period of 100 years, तो plants के जो trees हैं, and if you are thinking of a century, decade is a period of 1000 years, this is a period of 100 years, you just educate the people. आपको लोगों को एजुकेशन देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट एजुकेशन नथिंग इज इम्पॉसिबल. So when we set about the task of higher education, जब भी हम higher education की बात करते हैं, we should be absolutely clear in our perceptions. What do you mean by perception? Means we should be absolutely clear in our minds of the goals of education, कि education की क्या aims है, क्या objectives हैं, in the specific context of the nation का development, कैसे nation का develop होगा. No doubt means there is no doubt, कोई आशंका नहीं है कि one of the most important aim of education is to create the required range and nature of the trained manpower so that it can have access. Access means approach to बी नीडेड बाय द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द नेशनल ग्रोथ. जी, ग्रोथ में हर एक सेक्टर में हर एक बंदे की आवश्यकता है, और जिसकी वजह से वो किस वजह से हो पाती है, व्हेन यू आर एजुकेटेड, राइट. एंटायर एजुकेशनल अपरेटस मींस, यहाँ पे अपरेटस इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, यहाँ पे अपरेटस है पूरी जो एंटायर एक एक बच्चा जो काम करता है. इट मस्ट बी गियर्ड अप मींस, देखिए, गियर्ड मीन्स आपको तैयार करती है प्रोग्रेसिवली, जिससे कि आप फुलफिल कर सके डिफरेंट फेजेस को ग्रोथ के हर एक सोसाइटी में, वेदर इट्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. देखिए, प्राइमरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जिनमें काम बहुत ही लो लेवल पे होता है, मतलब वी आर डूइंग द वर्क, हम लोग अपने घर में हैंडीक्राफ्ट बना के कुछ थोड़े छोटे लेवल पे भेज रहे हैं. सेकेंडरी सेक्टर्स वो होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं बाहर जो आपको शॉप्स मिलती हैं जहाँ पे आप अपने कपड़े वपड़े खरीद लेते हैं, कुछ स्टोर्स होते हैं वहां पे. एंड व्हाट इज द टर्शरी सेक्टर मींस, जब आप अपने बहुत ही हाई लेवल बिजनेस स्केल पे बात करते हैं, व्हेन द एवरेज you can say the average estimate of the country is calculated in crores, that comes the tertiary sector. जैसे कि आप कह सकते हैं हमारा खादी डिपार्टमेंट, जो कि एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आप देख सकते हैं. टर्शरी सेक्टर्स बहुत ही ऊंचे ऊंचे लेवल के सेक्टर्स होते हैं. तो इसका एम क्या होता है कि कंट्री जो है, इट डज नॉट एक्सपीरियंस नाइदर पॉसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय पॉसिटी? पॉसिटी मींस किसी चीज की कमी होना, आइदर पॉसिटी और यू कैन से अ सरफीट ऑफ ट्रेन मैन पावर इन एनी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी. मींस दिस असर्फिट का मतलब, ए का मतलब जहां पे आ जाता है, डी जहां पे आ जाता है, ये जो प्रीफिक्स लग जाते हैं, दैट मींस दीज वर्ड्स आर नेगेटिव, राइट. वो चीजों में कमी नहीं आनी चाहिए. जो रिक्वायरमेंट है हमारे एजुकेशन की, हमारी कंट्री की, इज फ्री. वी आर डेमोक्रेटिक मींस द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. लोगों के लिए बनाई गई है, लोगों से बनती है और लोगों के लिए ही बनाई जाती है. सेक्युलर है मींस यू आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन. देयर इज नो, you can say, there is no restrictions that you have to follow the Muslim religion. No, you are free to follow any religion, right. Socialist nation है, बहुत ही ज्यादा social connections हैं, which is aspiring for the rapid development. देखिए, ये बहुत important word है. Rapid means very fast. That entail means that prevails a specific recipe educational institutions के लिए. और आज के डेट में जो educational institutions हैं, उनको developed होना चाहिए accordingly and must regulate themselves so that वो country को क्या दे सके, एक precise nature दे सके. Precise means बहुत ही कम, मीन्स कम शब्दों में ज्यादा बात बोलना, और क्वांटम मीन्स ज्यादा ऑफ ट्रेन मैन पावर एज प्रोजेक्टेड बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर प्लान इकोनॉमी. नाउ यू हैव टू the title of this poem, this paragraph, whatever, you just go through this and do all the question answers, right. Moving on to this third passage, again you have to read the following passage and then you have to answer the following questions. So एक old woman है, she lived in Uttarkashi at the foothill of Himalayas, and उनका बहुत ही बड़ा farm है, and hence she needed maid servants. काम करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, maid servants चाहिए. Means उसको मेल सर्वेंट्स चाहिए, राइट. बिकॉज देयर हैज बीन लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि जो मेल सर्वेंट्स हैं, दे वर मेड टू राइज विद द डॉन. राइज विद द डॉन मीन्स वो सुबह सुबह उठ जाते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं. द ओल्ड वुमन हैज नो अलार्म क्लॉक, कोई अलार्म क्लॉक नहीं है, बट शी हैड अ कॉक.
क्राउड एट द क्रैक डू डाउन मीन्स समझते हैं आप वो क्या, ये इस फ्रेज कितना अच्छा दे रखा है। क्राउड एट द क्रैक मीन्स, क्राउड एट द क्रैक का मतलब होता है वो सुबह में अपनी आवाज से सबको उठा देती है। नो सूनर डिड द ओल्ड वुमन, एक बात ध्यान रखिएगा ग्रामर में हमेशा ये फ्रेज एक साथ आता है, दिस नो सूनर, और नो सूनर के बाद जो टेंस लगता है वो हमेशा पास्ट टेंस लगता है। नो सूनर डिड, देख रहे हैं आप, नो सूनर के साथ ऑलवेज, ऑलवेज जस्ट कीप इन माइंड ये चीज आपके सेक्शन बी और सॉरी इन सेक्शन सी जहाँ पे ग्रामर सेक्शन है, उसमें जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे, थोड़ा सिक्स सेवेंथ में जाएंगे, तो यू विल सी वहां पे एरर करेक्शन के लिए आता है और नो सूनर के साथ डू लिखा होता है, अधिकतर ये आता है। और इस डू को बट मैम बोलती है जस्ट फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस, और ध्यान रखिए नो सूनर के साथ हमेशा पास्ट टेंस आता है, इसलिए नो सूनर के साथ यहाँ पे डिड आया हुआ है, राइट। डिड द ओल्ड वुमन शी जस्ट हियर द क्रॉक, कॉक की क्रो मतलब उसकी आवाज सुनती है और फिर वो उठ जाती है, ठीक है। 4 o'clock कितना, सुबह में 4 बजे के करीब, राइट। एंड दिस वेंट ऑन अ डे आफ्टर डे, मतलब हर दिन यही चलता रहता है। द मेड सर्वेंट्स जो बहुत ही ज्यादा लेजी हैं, कभी कभी वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनकी डेली स्लीप कंप्लीट नहीं हो पाती, देयर डेली स्लीप वाज डिस्टर्ब। एंड आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम दे वेंट टू अ कंक्लूजन कि भाई एक कॉक जो है शी इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, यही वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की कॉज है, वजह है। तो दे डिसाइडेड कि ये कॉक को मार देंगे। देन वे फेल्ट दैट वंस द कॉक वाज एलिमिनेटेड, अगर कॉक ही खत्म हो गई वहां से, देन दिस ओल्ड लेडी विल डेफिनेटली शी विल स्लीप, तो दे विल लेफ्ट अस इन पीस, ये हमें भी थोड़ा आराम करने देगी और ये हमारी स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करेगी, राइट। देयर इज नोबडी टू डिस्टर्ब आवर स्लीप। Accordingly, one night when the old woman she was felt asleep, वो सो गई बहुत जल्दी, उन्होंने कॉक को पकड़ा और मार दिया, राइट। देन नेक्स्ट डे देयर जुबिलेशन, जुबिलेशन का मतलब क्या होता है, जुबिलेशन न्यू नो बाउंड्स, जुबिलेशन मीन्स जो उन्होंने बैड एक्टिविटी करी है उसके कोई खत्म नहीं है, मतलब कोई बाउंड नहीं है। और विदाउट द कॉक टू वेक अप द ओल्ड लेडी शी जस्ट लेफ्ट टिल वे आफ्टर वेल आफ्टर डे ब्रेक एंड सो हर मेड सर्वेंट्स, मतलब कि समझ रहे हैं आप, डे ब्रेक मतलब दोपहर के 12 बजे तक वो सोते रहे, तब तक वो भी और उसके मेड सर्वेंट्स भी। नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ रियलाइजिंग दैट समथिंग वाज अमिस, कुछ ना कुछ चीज मिसिंग है, दिस ओल्ड वुमन शी जस्ट वेंट इन सर्च ऑफ कॉक कि भाई कॉक कहाँ है, शी कुड नॉट फाइंड द कॉक एनीवेयर इन द फार्म एंड शी वाज टोटली हार्ट ब्रोकन, वो उनका क्या हो गया, दिल टूट गया, एंड ऑन द लॉस ऑफ हर फेथफुल बर्ड, वो जो थी कॉक, राइट। However, undeteriorated the next morning, undeteriorated means she was not able to believe that the next morning she resumed the task of awakening her maid servants. उसने खुद से उठाया, and initially she woke them at a reasonable hour, which is out of the course of her habit. वो उसकी habit नहीं थी, but still she tried it. And but as the days spent, जैसे जैसे दिन निकलने लगे, the last countdown time, the woke the servant as soon as she was awake. जैसे ही वो उठती थी उन्हीं को ही उठा दिया करती थी, which was generally between 2 o'clock to 3 o'clock, 2 से 3 बजे के बीच में सुबह में उठा देती थी। एंड समटाइम्स हर insomnia, in what do you mean by insomnia means the one who has a bad habit of walking in sleep, जिन लोगों को ज्यादा नींद नहीं आती है, they it was very bad and she just woke up at 12 o'clock in the midnight, alas, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। कभी कभी उनको इतनी नींद नहीं आती थी उस चक्कर में कि वो 12 बजे ही उठ जाती थी, और अब मेड सर्वेंट्स को अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है, एंड एट लास्ट व्हेन द कॉक वाज अलाइव दे वर रेगुलरली वोकन अप, वो दे वर थिंकिंग कि भाई वो जब वो जिंदा थी वी यूज्ड टू वोक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, अब तो हमें कभी कभी 2 बजे, कभी कभी 3 बजे। एंड दे सून रियलाइज द विकेड डीड्स, विकेड मीन्स वेरी इविल, दिस एंड ब्रिंग देयर ओन पनिशमेंट, और उन्होंने अपनी खुद से पनिशमेंट डिसाइड कर ली। बेस्ड ऑन दिस द क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन एंड सम antonyms, synonyms are given. You have to complete this on your own. Moving on to this passage number 4. Right, this Abraham Lincoln के बारे में पढ़ रहे हैं. He was the American president at one time in 1807 in Kentucky to Thomas and Nancy Lincoln. देखिए, when Abe, this Abe हम अब्राहम को ही बोलते हैं. When he was just 9 years old, जब वो 9 years old के थे तो her mother she was passed away. और उनकी जो sister थी that is Sarah, she used to take care until her father was remarried. जब तक उनके पापा की दोबारा शादी नहीं हुई, हर सिस्टर वाज टेकिंग केयर ऑफ हर ब्रदर। दिस लिंकन हैज लेस देन एन ईयर ऑफ स्कूलिंग, सिर्फ एक ही साल बहुत ही उन्होंने स्कूलिंग करी है। द फैमिली का खुद ही एक बाइबल है, द फैमिली ओन अ बाइबल
एंड ही स्पेंड मेनी आवर्स, कि बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे वो इसी को रीड करने में, राइट। एंड बाय द टाइम व्हेन ही वाज 17, जब वो 17 के थे, ही वांटेड टू बी अ लॉयर, ही वांटेड टू बी एक वकील होना चाहते थे, बट व्हेन ही वाज 21 years old, he moved to Illinois. This is Illinois is a country, right, and spent a ईयर उन्होंने एक फार्म में खेती बाड़ी करी। एंड व्हेन ही वाज अ शॉपकीपर ही ट्राई टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट थे, वेरी फेयर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टूवर्ड्स हिज वर्क, एंड ही स्टिल वांटेड टू बी अ लॉयर, वो लॉयर ही बनना चाहते थे। बट इन 1836 में ही पास द टेस्ट एंड ऑफ कोर्स ही बिकेम अ लॉयर, वो लॉयर बन गए। एंड टाइम इट वाज ड्यूरिंग द टाइम दैट ही वाज सेलेक्टेड टू इलिनॉइस लेजिस्लेटर बाय द विग पार्टी, में उनको सेलेक्ट कर लिया गया था। ही बिकेम गुड एट डिबेटिंग, वो डिबेट करने में मीन्स वार्तालाप करने में बहुत ही अच्छे थे, और पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के साथ पब्लिकली कनेक्ट होने में बहुत अच्छे थे। Lincoln, he was inaugurated as the president in March in 1861 में, he was the first president of America. 5 weeks later वो civil war वहाँ पे चल चुका था, and this Lincoln wanted कि यूनाइटेड स्टेट्स भाई जो है वो एक नेशन बना रहे, तो इसलिए 2 साल बाद प्रेसिडेंट लिंकन ने क्या लिखा वहां पे, देखिए, राइट का रोट, past tense दिया हुआ है, semicolons दिए हुए हैं, because we have to explain what he has wrote. My paramount object in this struggle, मेरा जो सबसे important एम है इस पूरे स्ट्रगल में, इसकी मैं अपने देश को संभाल लूं, अपने यूनियन को संभाल लूं, is not either to save or destroy this slavery. What do you mean by slavery? Means गुलामी, गुलामी को सही करना और खराब करना नहीं है मेरा एम। मेरा एम ये है कि मैं देश को संभाल के रखूं। He was able to realize both his goals, दोनों के दोनों goals को। In 1863 में he issued an emancipation. What do you mean by emancipation? Proclamation freeing the slaves in the southern states. Emancipation means किसी चीज को publicly declare कर देना। बेसिकली इमेंसिपिएशन का मतलब होता है कॉपी करना। प्रोक्लेमेशन मीन्स किसी चीज को उन्होंने प्रोक्लेम किया कि आप सदर्न स्टेट्स को भी स्लेवरी से हटा दीजिए, एंड द कंट्री वाज एबल टू रिमेन अ यूनाइटेड नेशन, कि वो एक यूनाइटेड नेशन बन जाए। देन इवेंचुअली ऑल द स्लेव्स, जितने भी स्लेव्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वो सब कुछ फ्री हो गए। 14 अप्रैल 1865 में दिस प्रेसिडेंट लिंकन एंड मिसेस लिंकन, दे वर अटेंडिंग अ पार्टी, ए और इनकी वाइफ, दे वर अटेंडिंग अ पार्टी एट Ford Theater. It's in Washington DC, that is in America. While there he was assassinated. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये assassinated. Assassinate का मतलब तो होता है कि to kill, but when someone of a very big personality, very great personality person is dead, तब हम इस वर्ड को यूज करते हैं। गांधी जी, he was not killed by नाथुराम गॉडसे, ही वॉज असैसिनेटेड। जब भी किसी बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी की डेथ होती है, उनको मारा जाता है, उस टाइम पे हम ये वर्ड यूज करते हैं असैसिनेटेड। मीन्स दिस महात्मा गांधी, द ग्रेट फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी, ही वॉज असैसिनेटेड बाय नाथुराम गॉडसे, राइट। So similarly, he was in theater and he was assassinated and died 9 years later, 9 hours later, 9 घंटे बाद मर चुके थे। इवेंट जो है अकर हुआ बिल्कुल दिन के टाइम पे, व्हेन अब्राहम लिंकन, वो बिल्कुल वहां पे प्रेसिडेंट थे। इंक्लूडेड द अटैक ऑन द फोर्ट समटर एंड द स्टार्ट ऑफ द सिविल वॉर, जो कि 1861 से 1863 तक चला। एंड दिस इमेंसिपिएशन, ये जो चीज है प्रोक्लेमेशन, दैट इज 1863 में। और कंस्क्रिप्शन एक्ट जो आया 1863 में, और ये 1863 में ये भी, और गेट्सबर्ग का एड्रेस, ये सब 1863 में आया। इस टाइम पे ये सब वहां पे चल रहा था। Moving on to the question answers, you will be doing all these question answers on your own. Moving on to this passage number 5. In this, there lived a certain village, a poor old woman. A poor old woman, she used to reside in this village, where she collected a mess of beans. Beans होते हैं ना हम लोगों के, वो जो सब्जियां होती हैं, एंड शी वाज गोइंग टू कुक देम, और वो उनको बनाने वाली थी, राइट। शी मेड अ फायर ऑन हर हर्थ। फायर ऑन अ हर्थ का मतलब होता है एक, वो जो भट्टी चला लेते हैं ना नीचे, अंगीठी जिसको बोलते हैं। इन ऑर्डर टू बर्न बेटर, शी पुट इन अ हैंडफुल, उसने हैंडफुल ऑफ स्ट्रॉ डाल दी, मतलब उसके अंदर स्ट्रॉ डाले। When the beans began to bubble in the pot, जब beans उबलने लग गए, और one of them fell out and lay and never noticed, उन्होंने कभी चीज नोटिस नहीं करी, and never a straw which was already there, जो कि वही था। soon, जो रेड का कोल है, मतलब वो जो कोयला था, it jumped out of the fire and joined the pair, और वो भी साथ में जलने लगा। now
The straw began first and said, "Dear friends, how do you come here?" आप यहाँ कैसे आए हैं? The coal answered, "I just jumped out of that earth fire by a good luck." कि बहुत अच्छी से आया हूँ मान. I should have burned to ashes. मेरे को तो ashes में जल जाना चाहिए. The bean said that I have to come out. I too have to come out. मेरे को भी बाहर आना पड़ा with a whole skin. Whole skin means ऐसे ही पूरा बाहर आना पड़ा. I should have been cooked like comets. Cooked like comets means comets basically kind of एक आप कह सकते हैं एक तरीका होता है जिसमें कोई चीज ना आप उसको कुक करते हैं with their skin only, right? Luckily I managed to slip through her fingers कि मैं उसके fingers से फिसल गया. And what he do मतलब what is better to do now, said the coal. I think answer the bean ने क्या आंसर किया, that as we have been lucky to escape with our lives, कि हम लोग बहुत ही ज्यादा lucky हैं कि हम अपनी दुनिया से भाग रहे हैं. Escape means to run. We all together move into foreign lands. हम लोग foreign land में जाएंगे. And the proposal pleased the two other and they started on their travels. और वो travel करने लगे. Soon they become a little brook. एक छोटी सी brook बन गए. As there was no bridge. Brook क्या होती है? एक छोटी सी river होती है. The straw was stuck with a good idea and said that I lay myself across. मैं भी अपने आप को यही रखता हूँ so that you can get me over as I were a bridge. कि अगर मैं एक bridge होता हूँ तो मेरे ऊपर से निकल सकते हैं. So the straw stretched him from one bank to the other. What do you mean by bank? This is not a bank. This is the kinara of river, right? And the coal quickly trod up to go to the newly made bridge. वो नए bridge पे गया. And however she reached the middle, वो middle में गया and heard that the water rustling बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में रसल कर रहा है. And stopped and could not go further. But the straw जो है it begins to get the bird broke into two pieces. वो दो pieces में हो गया and brook में गिर गया and the coal भी slipped हो गया. Hissing as she just touched the water. The bean who was prudently remained. What do you mean by prudent? Prudent means wise. Very important word. It remained on the bank, behind the bank and laughing so excessively, इतना ज़्यादा हंस रहे थे that she burst. Now she certainly done on forever. कि मतलब उसका हो गया है. If the tailor on its travel has not by good luck stopped to rest by himself by the brook, कि भाई वो खुद से वहां पे रुक जाए. Now he just took out the needle and thread and stretched and stitched her together. एक साथ stitch कर दिया सब. And the bean he just and that he had been sewing her, अब उसको सिल दिया है with black stitches on all the beans since they have a black seam. सबकी क्या हो गई? एक black seam हो गई, एक line हो गई, right? According to this passage, you just have to complete all these question answers, right? So that was all about these unseen passages. Please go through it once again, read them, do the question answers on your own, and keep reading each day and stay blessed.